Okay, so what we'll do is we'll target to understand, the first chapter. If you can see my screen right now, obviously, we are going to discuss the introduction to web. Okay. Yeah. So I'll just switch to the tutorial that I have come up with for this particular session. This is obviously the you know the course content that you already have with you, so that you must have gone through this already. It consists of HTML, CSS, introduction to CSS, not, I mean, only as much as we want as as developers, also the HTML as much as we want as developers, but the majority of the content or the core concentration is on JavaScript and jQuery. So let's start with the first chapter for today, which is introduction to web. Okay. Now, can you see this particular page that I have just opened up that says introduction to web? Yeah? You can see that, right? Yes. Okay, so we'll start from the grassroots. We'll start from the very basic. You might know a few things or you might not know them. That doesn't matter. We'll start from the grassroots and we'll go to the intermediate level, and then the aim is to go to the advanced level. By the end of this course, you should be able to develop any kind of application using JavaScript, jQuery, HTML. So that is the objective. So we start from the grassroots. So we discuss introduction to web as our first topic. That's why this is chapter 1. As you can see, the first thing that we want to discuss here is that web is a global collection of networks, both big and small. When you talk of internet, what necessarily do we mean by internet? That is the first thing to understand before you try and become a web developer. Before you try to jump ahead and jump the gun to HTML or JavaScript or jQuery or anything of that sorts. First, it's very important to understand what is internet. So internet, like we've just mentioned here, is nothing but it's a global collection of networks, both big and small. So this, in other words, means it's a network of networks, to put it differently, right? Yeah. So now all these networks, चाहे छोटे networks हैं या बड़े networks हैं, network of computers जो हम बोल रहे हैं, all these networks जब ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, when it's a network of networks, when they come together, हम बोलते हैं कि भाई this is web. Understand? This is web. So okay, I think we have Prabhat here as well. I can see that. Okay, but I think he has joined in. Prabhat, are you there? Yes, sir. Yeah, Prabhat, actually, I think you guys have an issue there. Are you, Prabhat, able to hear me clearly? Yes, sir. Okay. ठीक है, maybe you guys have a problem with your audio. आप लोग फिलहाल हम फोन पे भी, मैं फोन भी चालू रखता हूँ, लेकिन सौरभ, I would recommend that you also check your audio after this session. Okay? Yes, sir. Check your audio after this session. Right now, I'll keep the phone on. Chalo, it's good that Prabhat has made it. Yeah, tell me. I'm not sure if I got that. What is that? Come again, please. Okay, no issues. We'll sort that out. Let's finish this. Let's go ahead with this session right now. Okay? At least you're able to hear me clearly on the phone, right? And Prabhat, you have no problems in listening to me, correct? Oh, yes, sir, correct. And also you can see the screen very clearly. So that's good. That's fine. That's good then. So yeah, like sir, actually मैंने app. Yeah. आपने app install किया है? Yes. आप लोगों ने app install किया है, सौरभ? Yes, sir. Yes, sir. Okay, चलो कोई बात नहीं, no problems. We'll sort that out post the session. Let's not waste time with the session right now. Let's go ahead. Okay? Yeah.
So basically, like we were just discussing, web is nothing but it's a collection of computers. To put it in the most simplest way, when computers come together, when networks of computers come together, we say it is web. It could be, it could be small networks coming together, big networks coming together, but they are all interconnected on the web, and we say this is web. So, and it is also important to understand that, any computer, when it is, when it is connected to internet, it is also connected to the web. So, in other words, every computer that is connected to internet is a part of the network, right? So in fact, right now my computer is connected, and we are connected to the web. Similarly, your computers are connected to the web. So it's very basic. It's a very basic thing, but a very important thing to understand as well. So moving on, all those, see, we talked of networks. We said कि okay, networks होते हैं और वो web बनाते हैं, और इन networks में ये computers होते हैं जो network बनाते हैं. But it must be understood that any computer connected to internet could either be a client or a server. या तो client होगा या server होगा. Now what is this client and the server? Now सर्वर्स हम उन कंप्यूटर्स को बोलते हैं, उन मशीन्स को सर्वर बोलते हैं जो किसी किस्म की सर्विस प्रोवाइड करते हैं. दे प्रोवाइड सम वेब सर्विसेज और एनी सॉर्ट ऑफ सर्विस टू बी अवेल्ड. नाउ क्लाइंट्स और दोज मशीन्स, दोज कंप्यूटर्स जो उन सर्विसेज को अवेल करती हैं. या absolutely. Absolutely. So all the computers which provide services are servers, and the computers which avail these services are called the clients. Very simple stuff. No, nothing complex in that. No rocket science here, but very important to remember. Very important to get this perception. Yes, sir. Okay. Now, when you say servers, these servers, there are different services that they provide. Like we just know, we all of us use Gmail. So so it's these are email servers, and then you could sometimes you also send attachments. We say these are FTP servers. You can send a file transfer protocol. Similarly, servers can provide n number of services, right? तो बहुत अलग-अलग किस्म की सर्विसेज हो सकती हैं. Now, next important thing to understand here in this today's session is the client-server architecture. Although we have discussed this already to some extent, but let's elaborate a little bit more on this. हमने जैसे discuss किया, there are servers and then there are clients. Servers provide services, clients avail these services. अब अगर थोड़ा और specifically बात करें, तो how does this use case or how does this particular mechanism trigger? So basically, it's very important to understand that it is the client which first makes the request. It sends a request to the server. Server responds with the response. That is a very important thing to understand. Let's dig a little deeper into this. Let's understand what we actually mean by this. Whenever you send a request to the server, I mean, whenever a client sends a request to the server or server responds back, this happens through HTTP headers. We will eventually talk about them. HTTP headers कुछ नहीं होते हैं, but they carry the information to and fro. So this is a critical part to understand here. Now let's proceed a little bit here and see what we want to say actually. When you input an address into your browser, it sends a request to the server, hosting the domain, and server responds. So for example, you type in google.com and you hit enter. So what happens is a request goes to the Google server, which then responds back with a web page. This is a very simple example. You understand? So to understand this mechanism, let's look at what a browser is. When I say browser, am I talking about the server or the client? Absolutely, I'm talking about client. So what is a web browser then? So a web browser is commonly referred to as a browser. It's a browser software, so to say. It's an installed software. You install it on your machine. It is not, हम लोग generally refer करते हैं browser. But अगर हम, if we look at it with a very
माइक्रोस्कोपिक आई एंड नॉट अ वेरी जेनेरिक व्यू, अगर हम बहुत ही इसको स्पेसिफिकली देखें तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर विच इज इंस्टॉल्ड ऑन योर मशीन। उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस ये है कि यूजर्स कैन व्यू द वेब, व्यू द इंटरनेट, यू कैन सर्व द इंटरनेट। दैट इज व्हाट अ ब्राउजर इज इन अ वेरी सिंपलेस्ट ऑफ terminology. But if let me read this out for you to get a little more out of it. So it says web browsers, commonly referred to as browser, is a software application installed on a client computer to retrieve, present, and traverse information resources on the World Wide Web. So like I said, in simplest of words, a browser is a software that enables the user to view the internet. Some of the popular browsers are, you must be aware of these: Google Chrome, Firefox, IE, right? So when you type a URL in the address bar of a browser and hit enter, the browser sends a request to the server. The server then processes the request and responds to the browser, letting it know the type of data the server will send. Okay? So the browser prepares itself for data which could be text, images, video or any other media. So अगर मैं इस कहानी को if I cut it short, it's very simple. क्या होता है, ब्राउजर जब सर्वर रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, तो सर्वर उसको प्रोसेस करता है, लेकिन सर्वर रेस्पॉन्स भेजने से पहले क्लाइंट को एक इंफॉर्मेशन भेजता है, मतलब ब्राउजर को एक इंफॉर्मेशन भेजता है। क्या इंफॉर्मेशन होती है? वो मेटाडेटा होता है। क्या मेटाडेटा होता है? वो ये मेटाडेटा होता है कि मैं क्या भेजने वाला हूं। ठीक है? तो सर्वर सेज कि लिसन, आई एम गोइंग टू सेंड यू, आपने जो रिक्वेस्ट भेजा है उसके रिटर्न में आई एम गोइंग टू सेंड यू, अभी भेजा नहीं है, आई एम गोइंग टू सेंड यू some images, maybe some text and a video, so be prepared. Okay, so what browser does is, अब उसको पता है कि क्या आने वाला है, so वो पहले से तैयार रखता है कि ठीक है मुझे इमेज रेंडर करनी है, या मुझे टेक्स्ट रेंडर करना है, या मुझे वीडियो रेंडर करना है. So it looks for its resources so that it is able to then render the content जो आने वाला है. This is how typically it works. Is that clear? Yeah. So once the content comes in, एक बार content आ गया सर्वर से, उसके बाद browser tries its best, level best to make sure that it is displayed on the window. अब इसका मतलब ये नहीं है कि necessarily it will be successful. आपने देखा होगा कई बार इंटरनेट पे जब हम देखते हैं तो कुछ इमेजेस नहीं दिखती हैं, कुछ वीडियोस नहीं चलते हैं. सो इफ अ ब्राउजर इज कैपेबल, अगर ब्राउजर के पास वो सारे रिसोर्सेज हैं वो कंटेंट दिखाने के लिए which the server has just sent, if it is capable, it will do it. If it is not, if it doesn't have a particular plugin or a particular resource, or it doesn't have the understanding of some kind of data that has come in, it will fail to display that. It's very simple. Is that part clear? Okay. Yes. So, proceeding, what we can learn here is it says the server then sends actual data. जैसे मैंने बोला, सर्वर ये इंटीमेशन भेजने के बाद कि भाई मैं क्या भेजने वाला हूं, उसके बाद वो एक्चुअल रेस्पॉन्स हेडर भेजता है क्लाइंट को और बोलता है कि भाई ये है, एंड देन द ब्राउजर स्टार्ट्स टू रेंडर इट. रेंडर इज अ वेरी टेक्निकल वर्ड टू अंडरस्टैंड हियर, वी विल फ्रीक्वेंटली यूज इट. रेंडर मींस टू मैनिपुलेट एंड टू एक्चुअली स्टार्ट बिल्डिंग अप फॉर द यूआई जनरेट करना. ठीक है, जो भी कंटेंट आया है उसको एक्चुअली draft out karna on the window, to actually paint it out. That is what rendering basically means. Okay, Once again, sir. yeah. Prabhat. Yes. So can we proceed then, or you're something to ask? Please repeat that, sir. Rendering. Okay, रेंडरिंग में ये बोल रहा था बेसिकली. रेंडरिंग क्या होती है, जब हम we will talk more about this in time to come, but I was just giving you a quick glimpse of it. Rendering means when there is any kind of content which needs to be shown. ठीक है, so the browser starts to build UI. वो उसका UI बनाने लग जाता है. ठीक है, सपोज HTML है, वो टैग है, सपोज टेबल टैग है, तो वो टेबल बनाना शुरू कर देगा. इमेज है तो उसका जो इमेज का जो बाइट्स हैं, द बिट कोड ऑफ इमेज, इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग दैट इमेज.
सो बेसिकली एक्चुअल यूआई बनाने की प्रोसेस को रेंडरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ब्राउजर रेंडरिंग चालू करता है उस कंटेंट की जो सर्वर ने भेजा है। रेंडरिंग चालू करता है मतलब यूआई बनाना शुरू कर देता है, ओके, विजुअल्स बनाना शुरू कर देता है, या ओके। सो दैट पार्ट इज क्लियर। And like I told you, point number 5, it says, browser tries its best to display the content, whatever content has come from server, but it is not necessary it will be successful, depending on what are the resources, what are the capabilities of that particular browser. So if you look at point 6, it says sometimes browsers also use plugins to display the content जो server ने भेजा है, क्योंकि उसको खुद में क्षमता नहीं होती है वो कुछ चीजें करने की, उसके लिए हम प्लगइन्स भी इंस्टॉल करते हैं कई बार। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लैश प्लेयर इज अ वेरी फेमस प्लगइन दैट इज यूज्ड टू प्ले वीडियोस एंड यू हैव यूज्ड इट रिग्रेसली, सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ अ प्लगइन व्हिच अ ब्राउजर यूजेस, राइट? या, so it's a third party thing you install, it's called a plugin you install into a browser so that your browser is able to do things which it cannot ideally do, it cannot do it without that particular plugin. So that is what the purpose of the plugin is. So proceeding next, generally क्या क्या होता है, browser के components क्या क्या है roughly. It's not a hard and fast set of components, it could be plus minus, but this is a generic set of things that we are talking about. जैसे मैंने बोला सबसे पहले UI होता है एक ब्राउजर का, आपने देखा होगा जो UI मतलब जब हम UI बोलते हैं ना कभी भी मतलब यूजर इंटरफेस जो आपको दिखता है, तो ब्राउजर का UI क्या होता है, उसमें एक एड्रेस बार होता है, बैक फॉरवर्ड बटन्स होते हैं, बुक मार्किंग मेन्यू होता है, then there is that window there, document, and then basically whatever you see on the browser is the UI part of the browser. It's very simple. And then you have the browser engine. Browser has an engine in it which marshals actions between UI and the rendering engine. So it marshals actions between UI and the rendering engine. मतलब जो UI है जो दिख रहा है और रेंडरिंग इंजन जो बना रहा है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन करता है ताकि UI रेंडर करते करते वो UI को अपडेट करे, क्योंकि मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले बोला रेंडरिंग से हम UI बनाते हैं, तो जैसे ही वो रेंडर करता है UI तो ब्राउजर इंजन क्या करता है उस जो बना हुआ है जो रेंडर करके UI बना है उसको चिपका देता है UI पे फ्रंट एंड पे सो दैट यूजर कैन सी इट, ओके। So that is browser engine. In simple words, what it does, whatever is rendered, it shows it in the UI. And then the actual rendering engine जिसकी हम बात कर रहे थे, it is responsible for displaying requested content. जैसे मैंने आपको बोला था, what is rendering? It is displaying, generating UI. So it is responsible for displaying requested content. For example, if the requested content is HTML, the rendering engine parses HTML and CSS and displays the parsed content on the screen. So basically rendering does nothing but it displays the content for you. It shows the content जो सर्वर से आया है उसको ब्राउजर पे दिखाना है ना, तो वो काम रेंडरिंग इंजन करता है, ओके। So this is another important component of a browser. First we saw UI component of the browser, browser engine, and now rendering engine. तीसरा component हमने देखा ब्राउजर का. Now next component of the browser is networking, okay. जब आप ब्राउजर पे होते हो हमने सबसे पहले डिस्कस किया दैट यू मेक कॉल्स टू द सर्वर या सर्वर से रिक्वेस्ट आता है, तो ये नेटवर्क बन गया, राइट, ये एक ट्रैफिक बन गया, नेटवर्क बन गया। तो ये नेटवर्किंग की जो कॉल्स हैं सर्वर को रिक्वेस्ट भेजना, सर्वर से रिस्पॉन्स आना, इसको हैंडल करने के लिए कोई कंपोनेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, उस कंपोनेंट को हम बोलते हैं नेटवर्किंग कंपोनेंट ऑफ द ब्राउजर, ओके। इट हैंडल्स कॉल्स सच एज HTTP रिक्वेस्ट्स using different implementations for browser platform behind platform independent interface. Basically it's a separate layer altogether, networking layer of a browser, very simple. Then we have UI backend. So it is used for drawing basic widgets like combo boxes, windows. You could say UI backend is a subset or a part of rendering engine. तो UI backend क्या करता है, कुछ UI controls generate करता है जो दिखाने हैं यूजर को, जो पेज पे आने वाले हैं, जैसे combo box हो गया, windows हो गया. So basically UI generation again, but it is specifically meant for certain controls, like combo boxes like we've just discussed, or windows or a text field. A part of rendering again, of course.
Then we have JavaScript interpreter, क्योंकि हमें पता है हम HTML भी लिखते हैं, JavaScript भी लिखते हैं वेब पेज में, तो एक ब्राउजर को JavaScript भी समझना पड़ता है, राइट? क्योंकि अगर ब्राउजर JavaScript नहीं समझेगा तो फिर वो JavaScript इंटरप्रेट कैसे होगा? So we have an interpreter for JavaScript as well in the browser. It is used to parse and execute JavaScript code. Okay? Yeah. Lastly, ब्राउजर का एक स्टोरेज कंपोनेंट होता है. स्टोरेज कंपोनेंट मतलब हमने देखा है कई बार हम कुकीज वगैरह या कुछ भी डेटा स्टोर करते हैं, राइट? तो ब्राउजर का ये जो कंपोनेंट होता है जो डेटा स्टोरेज करता है उसको बोलते हैं डेटा स्टोरेज कंपोनेंट. इट्स अ परसिस्टेंस लेयर which persists the data while the user is online or after the user is gone offline. It persists his data which is required when he logs back in. So the browser may need to save all sorts of data locally such as cookies. Browsers also support storage mechanisms such as local storage जो हम HTML5 में देखेंगे बाद में. IndexedDB we'll talk about this eventually. WebSQL आपने सुना होगा. This is again a browser based SQL language. File system. So you might want to save data basically. Data storage component does nothing but saving the data. Clear? Okay. It's all theory basically today because it's it's introduction. Next is cross browser compatibility. Okay. Now what is cross browser compatibility? अभी मैं आपको ये जितने भी पॉइंट्स है उसका एक नटशेल पहले बता देता हूं. W3C जो है ना, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, इट इज नथिंग बट it's a foundation wherein all the web gingantics have come together, all the bodies have come together and they decide the standards. वो बोलते हैं कि यार वेब पे क्या स्टैंडर्ड फॉलो होना चाहिए, कैसे वेब पेजेस बनने चाहिए. गाइडलाइंस बोलते हैं कि बटन्स ऐसे होने चाहिए, फॉर एग्जांपल यूजर का एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए, HTML का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए. तो वो बताते हैं कि कैसा होना चाहिए, वो उनके कुछ गाइडलाइंस हैं. और जितने भी ब्राउजर मैन्युफैक्चरर्स हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट का आई है या मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, दे आर एक्चुअली सपोज टू फॉलो दोज गाइडलाइंस. बट ट्रेजेडी ये है कि कोई फॉलो नहीं करता जनरली उसको बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन. एवरीबडी हैज हिज ओन वे ऑफ इंटरप्रेटिंग HTML, interpreting or rendering again, its own way of rendering the web page. Everybody does it differently. So उस वजह से क्या हो जाता है, जब आप वेब पेज बनाते हो या कोई एप्लीकेशन बनाते हो जो वेब पे चलनी चाहिए, अब वो गूगल क्रोम पे एक हिसाब से चलती है, आई में दूसरे हिसाब से चलती है, फायरफॉक्स में किसी और हिसाब से चलती है, बिकॉज all the browsers understand your web page differently. Their mechanism of understanding and implementation is very different because they do not strictly follow W3C. They have their own way of understanding and respecting HTML or even CSS for that matter. Is this part clear? Yeah. So every browser, so nutshell ये है, every browser understands differently क्योंकि उनका इम्प्लीमेंटेशन अपने अपने हिसाब से है. वो एक दूसरे से अग्रीमेंट नहीं करके रखे हुए हैं, एक दूसरे की कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है. ये एक ट्रेजेडी है एक हिसाब से. सो ये एक चैलेंज है. इसको हम बोलते हैं क्रॉस ब्राउजर कंपैटिबिलिटी. मतलब अगर आपका वेब पेज हर एक ब्राउजर में एक जैसा दिखे तो हम बोलेंगे कि आपका वेब पेज जो है ये क्रॉस ब्राउजर कंपैटिबल है. लेकिन अगर आपका वेब पेज गूगल में क्रोम में क्रोम में अलग दिखता है और फायरफॉक्स में अलग दिखता है, तो हम बोलेंगे कि आपका जो एप्लीकेशन है, वेब पेज है, ये क्रॉस ब्राउजर कंपैटिबल नहीं है. इट इज क्रॉस ब्राउजर इनकम्पैटिबल. ओके, राइट. सो लाइक आई सेड, W3C जो है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, it has laid out a standard as to how the browsers need to interpret the web pages. Point number 2 says, unfortunately, most browsers have their own mechanism of interpreting the web pages, which varies significantly from one browser to another. As a result, a web page that looks cool on one browser may look different or not so good on another. A web page that suffers inconsistency across browsers is said to be cross-browser incompatible. Okay? And the page that looks same across all the browsers is said to be cross-browser compatible. ये हमने अभी डिस्कस किया.
So it's therefore very important for a web page to be cross-browser compatible so that users get a consistent experience. Clear? Yes, sir. Okay. I think we have lost Prabhat here, but that's fine because I'm recording this anyway, so I will be sharing this. Yeah. So introduction to HTML, CSS, JavaScript, jQuery. Now this is the last part of our today's discussion because this is what we are going to do most of the time in this training now. We are going to understand HTML, CSS, JavaScript, jQuery. Yes, sir. So सबसे पहली बात यहां समझने वाली ये है कि एक कोई भी वेब पेज ले लो, उसके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. एक होता है स्ट्रक्चर, दूसरा होता है उसका लुक एंड फील, तीसरा होता है उसका बिहेवियर. नाउ स्ट्रक्चर मतलब वो कैसा है, उस बटन्स कहां पर है, टेक्स्ट किधर है, अलाइनमेंट, या कितने इमेजेस हैं, किधर को रखे हुए हैं, कितने बटन्स हैं, वट एवर असेट्स आर देयर ऑन द पेज. वो स्ट्रक्चर जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके पेज का. लुक एंड फील, कलरिंग कैसा है, मार्जिन, प्लेसमेंट, theme, the overall theme of your web page. That is the second characteristic. Third characteristic is the behavior, which is when you click on a button, it reacts in a certain way. Or the functionality basically of your web page, the behavior. That is the third characteristic. So ये तीनों characteristics हमको implement करने हैं web page पे. तो ये हम achieve करते हैं using HTML, CSS and JavaScript. Okay? Okay. Yeah. So the point number 2 says the same thing. In order to accomplish the above characteristics, HTML, CSS and JavaScript are typically used by the developers. So point number 3 की बात करते हैं. What is HTML then? It's hypertext markup language used to design the structure of the web page, which is the first point जो मैंने बोला था, structure पेज का. तो पेज का structure हम बनाते हैं HTML से. ठीक है? So HTML से structure हो गया. लुक एंड फील कैसे मिलेगा पेज को? लुक एंड फील मिलता है CSS से. Alright? So your CSS helps you achieve the look and feel of your web page. Okay? Very simple. Lastly क्या बचा? बिहेवियर. तो बिहेवियर किससे मिलेगा पेज को? जावास्क्रिप्ट से. So JavaScript is used to add behavior to the web page. So remember, it's a golden rule. HTML से स्ट्रक्चर बनाएंगे, CSS से हम उसको लुक एंड फील देंगे और JavaScript से उसको बिहेवियर देंगे. ओके? या. तो बचा jQuery. Then why do we need jQuery? It's an important question. Why do we need jQuery here? So let's understand that. So why jQuery then? Like discussed, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि भाई जावास्क्रिप्ट से बिहेवियर ऐड होता है, तो फिर jQuery क्यों चाहिए? मैं इसका नक्शल बता देता हूं, फिर हम इसको पढ़ेंगे. jQuery हमें इसलिए चाहिए, हमने थोड़ी देर पहले बात की थी ब्राउजर कंपैटिबिलिटी की, जहां पे हमने बोला कि भाई वेब पेज जो है वो एक जगह चलता है सही से, दूसरी जगह नहीं चलता. ये इनकंसिस्टेंसी है. तो आप जब बिहेवियर जावास्क्रिप्ट लिखोगे, जब आप बिहेवियर दोगे पेज को, तो उस बिहेवियर में भी वो इनकंसिस्टेंसी आ जाती है. वो ब्राउजर कंपैटिबिलिटी के इशू बिहेवियर में भी आ जाते हैं, जो आपको हैंडल करने पड़ेंगे, क्योंकि यू डोंट वांट योर यूजर टू सफर कि भाई गूगल क्रोम में तो सही से चलता है लेकिन फायरफॉक्स पे नहीं चलता. यू डोंट वांट दैट टू हैपन, राइट? सो उसको अचीव करने के लिए आप जावास्क्रिप्ट में आपको हैंडलिंग करना पड़ेगा. आपको जावास्क्रिप्ट में पूरा कोड लिखना पड़ेगा कि भाई प्लीज इसको अगर ये इशू आए तो ऐसा करो, वो इशू आए तो ऐसा करो, इफ एल्स बहुत काम करना पड़ेगा आपको जावास्क्रिप्ट में. क्या किस चीज के लिए काम करना पड़ेगा? ब्राउजर कंपैटिबिलिटी इशू को हटाने के लिए. तो वो करने के बजाय इंस्टेड ऑफ राइटिंग सो मच ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड टू बी एबल टू एड्रेस दिस ब्राउजर कंपैटिबिलिटी इशू, there are so many libraries available now, JavaScript libraries, which can help you or which enable you to accomplish this. मतलब जो काम आप खुद से करने वाले थे JavaScript में लिख के, वो उस लाइब्रेरी में पहले से किया हुआ है. ठीक है? सो इसलिए हम jQuery यूज करते हैं. सिमिलरली बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं.
जैसे डोजो है या AngularJS है. There are many more libraries which could be used, या SAP UI5 है, I mean the Open UI5 है, many of them which can be used. So jQuery is one of the most popular libraries which can be used to address this problem. ये एक हिस्सा हो गया कि हम क्यों लाइब्रेरी यूज करते हैं. दूसरा पार्ट भी है. दूसरा पार्ट ये है, रीजन ये है कि हम लाइब्रेरी क्यों यूज करते हैं, कि बहुत सारी चीजें बनी बनाई होती हैं लाइब्रेरी में. लॉट ऑफ स्टफ इज ऑलरेडी डन एंड मेड इन द लाइब्रेरी विच वी डू नॉट नीड और विच वी डोंट वांट टू मैन्युअली डू ऑल द वे इन जावास्क्रिप्ट. फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे मान लीजिए कोई कंपोनेंट है, मान लीजिए कोई चार्ट बनाना है, या मान लीजिए कोई एक विजेट है, XYZ विजेट जो कुछ फंक्शनैलिटी बनाता है, कुछ भी, सपोज रीसाइजिंग फंक्शनैलिटी है या कुछ भी है. अगर जावास्क्रिप्ट में करेंगे हमें पूरा खुद से बनाना है, लेकिन jQuery ऑलरेडी आपको वो कंपोनेंट प्रोवाइड कर रही है. सो जस्ट पिक इट अप एंड यूज इट. इट्स वेरी सिंपल, राइट? So it saves a lot of your time, lot of your productivity. Understand? So that is another very important aspect कि हम लाइब्रेरी क्यों यूज करते हैं. So jQuery क्या बोलता है? It says, write less and do more. मतलब आप लिखो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बहुत कुछ काम अचीव कर पाओगे, फंक्शनलिटी अचीव कर पाओगे. Okay, that is why we use jQuery. So let us quickly read this before we conclude this session. Now, first point, like discussed, JavaScript is used to add behavior to a web page, and jQuery is a JavaScript library. A question then arises as to why use a JavaScript library instead of a JavaScript directly. The answer partially lies in our previous discussion of browser compatibility. With pure JavaScript, your web page is bound to suffer inconsistency across browsers. Not all browsers would accurately and equally understand the behavior you added to your web page with JavaScript. So point 3 then says, a JavaScript library like jQuery is used to handle all browser issues and give user a consistent experience. A developer would otherwise need to write a lot of JavaScript code and handle these issues manually. Point 4 says, another important advantage of using a library is that most functionalities or behavior is pre-written in these libraries. With JavaScript, a developer would need to write lots of code to achieve the same behavior. Point 5, jQuery is all about write less and do more. Is all of this clear? Okay. So the nutshell, what we learned today is, firstly, web क्या होता है? We discussed that. What is web? It is nothing but network of computers and computers. Network of machines. Some of them are servers, some of them are clients, right? Then we discuss client-server architecture, which means client sends a request, server sends a response. Client sends a request, server sends a response. So it's a request-response mechanism. Okay? We learned that as well. And we learned how, when client sends a request, server sends back first the information, what I'm going to send. Browser prepares itself. Then server sends the content and browser renders it. We also looked at what is a web browser. We understood it's an installed software which user can use to view the web, right? जो हम web बात कर रहे हैं, वो देखने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर भी चाहिए ना, तो that is browser. Then we discussed the compartments or the structure, high-level structure or the components of a browser. We saw it has a UI, it has a browser engine, it has a rendering engine, networking layer, it has a UI backend, JavaScript interpreter, and data storage. Then we discussed browser compatibility, which is a big challenge in web world. How inconsistencies happen because all browsers behave differently. Okay, so we discussed that as well. And then we discussed a quick introduction to HTML, CSS, JavaScript, jQuery. We discussed what structure is, what look and feel is, what behavior is. And then we discussed how each of these technologies is responsible for each of them. HTML for structure, CSS for look and feel, and JavaScript for adding behavior. And then we discussed significance of jQuery and what is jQuery. jQuery is a JavaScript library. We understood jQuery can help us to avoid
browser compatibility issues. We also learned that jQuery helps us, in writing less and doing more because it gives a lot of stuff ready-made, right? Yeah. So cool then. So with this, we have discussed this very basic introductory part, introduction to web. The next time we meet, we will start with actually, writing a little bit of HTML and blending it with CSS. We'll get to the second part, introduction to HTML. Maybe I would club. I think I will club third chapter and second chapter together. We'll finish them together, 2 and 3. Okay? Yeah. So any questions for me right now? Are you sure everything is pretty clear? या मतलब ऐसा तो नहीं है कि मतलब कुछ भी समझ में नहीं आया. दो ही चीजें हो सकती हैं, कुछ भी समझ में नहीं आया, सब कुछ समझ में आ गया. Okay. ठीक है. So things are pretty clear right now, isn't it? ठीक है. Okay. So what we will do is we'll meet once more now. Tell me, are you available in the weekdays? Because I think आप ऑफिस से बहुत लेट आते हो, right?